Good morning, students. I hope you all are doing well at your home and keeping it safe. As we all know that COVID-19 is spreading all around us, so we need to take some safety measures for ourselves. So as a precautionary measure, आज हम सीखेंगे that how should we wash our hands. So for that I am having a code word that is Suman K. Now, S stands for सीधा. You need to learn how to wash our hands. S stands for सीधा. U stands for उल्टा. M stands for मुट्ठी. A stands for अंगूठा. N stands for नाखून and K stands for कलाई. So this is how today we have learned कि हमें अपने जो hands हैं वो कैसे wash करने चाहिए in order to keep ourselves safe. The topic that we are going to study today for microeconomics, that is price elasticity of demand. Now let us firstly understand the meaning of price elasticity of demand. Elasticity means stretchability, and when it comes to the word price elasticity of demand, it means how much the demand is stretchable in response to any change in price. प्राइस में आ रहे चेंज से क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है, दैट इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. That by how much percentage the quantity demanded changes in response to a percent change in price. So when it comes to its formula, how do we write it? Elasticity of demand is equal to percent change in quantity demanded over percent change in price. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो कॉन्सेप्ट है उसके कुछ टाइप्स हैं एंड प्राइस इलास्टिसिटी उनमें से एक है, और हम जो स्टडी कर रहे हैं दैट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वी आर स्टडीइंग दैट हाउ मच द क्वांटिटी डिमांडेड इज चेंजिंग इन रिस्पॉन्स टू एनी चेंज इन प्राइस, ओनली प्राइस. So the formula is percent change in quantity demanded over percent change in price, and here we are using this minus sign to denote the negative or opposite relationship between the quantity demanded and price. If the price increases, quantity demanded decreases. If the price decreases, quantity demanded gets increased. So to denote this relationship, we use the minus sign. Now let us see how do we calculate percent change in quantity demanded and percent change in price. So for that I am taking one example. Let us say I can consider a commodity X. So price of commodity X, then quantity demanded of commodity X. When the price of this commodity was 10 rupees, I was buying 50 units. Just for an example. When the price get decreased to 5 rupees, I was demanding 100 units. अब ये मुझे डाटा दे दिया गया है कि पहले जो प्राइस 10 रुपीज था, कंज्यूमर जो है 50 यूनिट्स ले रहा था. देन व्हेन द प्राइस डिक्रीज टू 5 रुपीज, द क्वांटिटी डिमांडेड गेट इंक्रीज टू 100 units. So with this data I need to calculate price elasticity of demand, that how much the demand is elastic. Now for calculating that, firstly coming to percent change in quantity demanded. Percent change in quantity demanded is equal to new demand minus old demand over old demand into 100. Or here you can write quantity, new quantity minus old quantity over old quantity into 100. So new quantity कितनी है? 100 units. पुरानी quantity कितनी थी? 50 units. So how much change is there? कितने परसेंट चेंज आया है क्वांटिटी डिमांडेड में? तो क्वांटिटी डिमांडेड का जो चेंज है दैट इज 100%. एक चीज तो हमें मिल गई, न्यूमरेटर हमें मिल गया दैट 100% चेंज इज देयर इन परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड. नाउ कमिंग टू परसेंट चेंज इन प्राइस. आई एम जस्ट राइटिंग हियर फॉर रेफरेंस, परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमारा आया है 100. Now let us calculate percent change in price. New price minus old price over old price into 100. So new price कितना है? 5 rupees. उसके बाद old price कितना है? 10 into 100. So here I am having
-5/10 into 100 पर आई एम हैविंग -50% चेंज, -50% ही आएगा, यस। सो परसेंट चेंज इन प्राइस इज -50%. Now let us calculate the price elasticity of demand. So formula for price elasticity of demand, again I am repeating, percent change in quantity demanded over percent change in price, and here we would have the minus sign. So putting up these values, quantity demanded में कितना परसेंट चेंज आया है 100, प्राइस में कितना चेंज आया है -50. So here it is 2. Value of price elasticity of demand is 2. It means प्राइस में अगर 1% चेंज आएगा तो क्वांटिटी डिमांडेड में कितने परसेंट चेंज आएगा 2%. प्राइस हाफ हो गया तो क्वांटिटी डिमांडेड डबल हो गई. सो दैट इज हाउ फॉर द गिवन वैल्यूज वी वुड कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. और इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस फॉर्मूला एक और फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड over change in price. Here the minus sign would be same, old price and old quantity. This formula also you can use. अब हम यही जो सम है इसको इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे. क्वांटिटी पहले कितनी है 50, अब कितनी हो गई 100. चेंज कितना आया है 50 का. प्राइस पहले कितना था 10, अब कितना हो गया है 5. चेंज कितना आया है -5. Now old price is 10, old quantity is 50. Elasticity of demand value is 2. Answer would be same. ये जो formula है, this is a bit shortcut formula. You can use this formula. So this is how we calculate the price elasticity of demand. Now the next concept is degrees of price elasticity of demand. We need to understand here degrees of price elasticity का मतलब क्या है, then we would understand its type. Degrees of price elasticity का मतलब है that categories जो बनाई गई हैं in the response to how much the demand is changing in response to any change in price. प्राइस के चेंज होने से डिमांड में कितना चेंज आता है, यही चीज़ को बेस रख के कैटेगरीज बनाई गई हैं, डिवाइड किया गया है, जिसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी. So we are having five degrees of price elasticity. First is inelastic demand. Second is less elastic demand. Third is unitary elastic demand. Then fourth is more elastic demand. Last one is perfectly elastic. Perfectly elastic demand. Let us study these degrees one by one. Firstly, coming to the inelastic demand. Inelastic demand क्या होगी? Inelastic demand means that demand is not at all stretchable, no matter how much the price is increasing or decreasing. It means here the value of elasticity of demand is 0. जहाँ पे value of elasticity of demand 0 आ जाए, that means here the demand is not at all stretchable, no matter how much the price is changing. Now ये होता किस केस में है? Perfectly inelastic demand उन केसेस में होती है when it comes to the necessary goods. जो भी गुड्स हमारी कंजम्पशन के लिए ज़रूरी हैं, नेसेसरी हैं, we do consume them, we need to consume them. उनमें अगर प्राइस इंक्रीज भी होगा या डिक्रीज भी होगा, बिकॉज दीज आर नेसेसरी फॉर आवर कंजम्पशन, हम ये चीज़ें कंज्यूम करते हैं. जैसे कि
मेडिसिन आर नेसेसरी फॉर द पेशेंट्स। अब उसमें अगर प्राइस इंक्रीज भी होगा या प्राइस डिक्रीज भी होगा, हमारा जो कंजम्पशन लेवल है इट रिमेन्स ऑलमोस्ट सेम। सो इन दैट केस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, द प्राइस इलास्टिसिटी विल बी 0. Then if we need to represent this degree graphically, how would we represent that? On these axes I would be taking quantity and here I would take price. So when I need to draw the graph for perfectly inelastic demand, it will be represented by a vertical line. That's it. No matter how much the price is increasing or decreasing, the quantity demanded is same. So here the value of elasticity is 0. It happens in the case of necessary goods where the demand does not change no matter how much the price is changing.